Welcome to my students. Myself Prathiranjan Behra. I am lecturing chemistry of Nanda Vidya Mandir Plus 2 Science College, Berhampur. Today's my topic is electronic configuration of elements. So what is the electronic configuration? Like the electrons are distributed in different orbitals. It's called electronic configuration. Like the way of electrons distributed among the orbitals is electronic configuration. Clear? What is the electronic configuration? The electron distribution of the among the orbitals is called electronic configuration. Already discussion करछि तमरा quantum numbers like for different quantum number अछि principal quantum number azimuthal magnetic spin quantum number से related तमे कोन electronic configuration से परिबो according to quantum number को जेकरा maximum electrons are in different orbitals like s orbital number s orbital लेकन तमरा only one orbital अछि maximum electron 2 electron पाइबो तेरा maximum orbital केतना अछि तीनटा orbital अछि with the data 5 like f7 orbital ଅଛି these are orbitals ये orbital तमे electron किंती distributed करिवो is called electronic configuration like the electronic configuration can be distributed by different rules. The different rules can be discussed this class. The first rule is Offer principle. The first principle Offer principle. Like offer means building of. Is the German word offer means building of like the electron can be distributed up to building of like offer principle कौन कहले the electrons can distributed in order of energies like the lowest energy will fill first then highest energy will be next so first offer principle कहले which is कौन lower energy positive होची कौन first fill हबो next कौन तुमरा higher energy fill up होइछो so according to offer principle the electrons are filled in different orbitals in order of their increasing energies. हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करबा in order of increasing energies. मतलब एनर्जी समग्र लोएस्ट एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी में डिवाइड कर परबो according to n plus rule. According to n plus rule. Like what is the n? N is equal to principal quantum number. L is equal to azimuthal quantum number. So हम electron distribution करिया according to n plus rule. એટલે આપો first rules કોણ કહે in case of if n plus l value is lower value then will fill first then higher energy fill up if n plus l value low it will be possess field first
In case of n plus l value the lower value, then we field first. For example, 4s orbital, next 3d orbital. In case of 4s orbital, मैं पढ़लु कोन क्वांटम नंबर डिस्कशन कर जाछि इज अ 4s orbital n is equal to 4 l is equal to 0 है ना एजे मित्र पढ़न कहतले इन केस ऑफ l is equal to 0 this is s of cell l is equal to 1 b of cell l is equal to 2 d l is equal to 3 f. So 4s orbital n is equal to 4 l is equal to 0. 10 plus l is equal to 4 plus 0 is equal to 4. Next 3d orbital, this n is equal to 3, l is equal to 2. This l is equal to 2, 3 plus 2 is equal to 5. Then the difference d orbital, the first 4s orbital n plus l will is equal to 4, the next orbital 3d orbital is equal to 3 plus 2 5. So 4 and 5, so n plus will car low hoche 4s orbital. Next height hoche higher value hoche le car lower energy hobo 4s orbital to hoche lower energy. Next 3d hoche higher energy. So first fill up किया होगा 4s orbital will fill first, then 3d orbitals fill up according to n plus l rules. The second rule is if n plus l value are equal, then lower n value will possess lower energy and fail first. In case of n plus l value are equal, then the lower, which is the lower energy, is considered to the lower n value. Like principal कोटे तो मैं n को consider करूँ. For example, 3p and 4s. There are two orbital अच्छे, 3p orbital, 4s orbital. This is the n plus l value. N is equal to 3, d is equal to 1. So total value is equal to 4. This 4s orbital, 4 plus 0, this is equal to 4 value. And both are equal. It both equal as see एक केस में तुम कौन करियो कोड़ा lower energy तुम बाहर करियो. Like consider करो मैं lower n value consider करियो. Like it n value के तो 3, this n value is equal to 4. It have a lower energy. This is higher energy. 3p orbitals will fill first, then 4s orbital fill up. The second rule. Dita rule मन रखो है. Dita rule तो हम कौन करियो electron distributed करियो different orbitals. The first rule is n plus l. In case n plus or l lower value होची. Is the कौन होची lower energy in field first. In case both are equal, then consider करियो lower n value. Lower n value which will possess lower energy. Why? Like हमरा 3p 4s करो. 3p 4s तो कंपेयर करिवो. Like हमरा 3p टा होची कोन थर्ड सेल, 4s टा होची फोर्थ सेल. This is first cell, second, third, fourth. Like 3p टा करते मोटी 3p इट. हम ऑलरेडी कहते k cell, L cell, M cell, third cell of M cell कौन है इसका 3s, 3p, 3d. तीन dash में. 3p टा कोड तो third cell होचे 4s टा कौन है 4th cell रे इलेक्ट्रॉन आछो. तो fourth टा होचे कौन हमारा higher energy. according to both side में कहते
कोन सेल बॉडी तार इंक्रीजिंग कोन एटा इंक्रीज होची सो 4 सेल इज कंसिडर्ड टू हायर एनर्जी 4s कोन हो 3p 4s कंपेयर करले 3p will fill faster than 4s orbital fill नेक्स्ट अफो आल्सो से कौन करले गुटे डायगोनटिकल हम कौन करे से डिस्ट्रीब्यूशन कर पाले इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डायगोनटिकली लाइक तमरा डिफरेंट ऑर्बिटल আছে like n is equal to 1 this is 1 orbital in case of n is equal to 2s this is 2s next 2p n is equal to 3 this is 3s 3p 3d third cell देखो 3s 3p 3d होची n is equal to 4 this is 4s 4p 4d 4f next n is equal to 5 this is 5s 5p 5d 5f in case of n is equal to 6 this is 6s 6p 60 last n is equal to 7 this is the 7s देखो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कोड एसनो आसो 1s next 2s next 2p 3s 3p 4s clear first orbital তোমার কোন আছে ওটি 1s orbital first this is the 1s lower ns according to Ampere principle the next consideration তোমার আছে 2s orbital next 2p next 3s next 3p 4s 3d next 4p next 5s next 4d next 5p next 6x next is 4f next 5d 6p this is the 7s these are the energy levels of different orbitals the lower energy is 1s let's consider for higher energy तुमने सॉल्व करे हिसाब एना तो होची कोन of diagonally representation of different energy orbitals the first concept clear according to electron configuration first concept is Ampere principle the second concept is Pauli's exclusion principle the second concept is Pauli's exclusion principle like Wolfgang Pauli in 1921 he discussed to the concept of electronic configuration like this theory according to this theory
electrons, there is no two electrons of an atom can have all the four quantum numbers like. Clear? According to Pauli's decimal principle, that no two electrons of an atom can have all the four quantum numbers like identically. Agora discussion करछि like four quantum numbers like principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. These are four quantum numbers. In case of any atom, गोटे एटम में मोर दुईटा इलेक्ट्रॉन अछंती, दुईटा इलेक्ट्रॉन केवल द फोर क्वांटम नंबर्स कड़ा सिमेट्रिकल के शो करिए, किछि द डिफरेंट नंबर शो करिए, मैक्सिमम तीनटा सेम ही पारे, बट द स्पिन क्वांटम नंबर्स must be different. ये तीनटा क्वांटम नंबर इक्वल ही पारे, but spin quantum number must be different. Must be different काहे तो रेकॉर्ड पॉलिस भी कहथिले गोटे ऑर्बिटल रे दुईटा इलेक्ट्रॉन केवल मैक्सिमम रहबे, लाइक s ऑर्बिटल फिर तीनटा ऑर्बिटल अछि, એટલે गोटे ऑर्बिटल तो दुईटा इलेक्ट्रॉन रहबे. पावलिस को कहले दुईटा इलेक्ट्रॉन का परस्पर प्रवृत्ति बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होत. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ले केवल सेम जिंस रहबे, सेम कम रे सेम क्लॉकवाइज रहबे, either clockwise or anti clockwise रहबे. Like number eta clockwise plus half or anti clockwise minus half. मतलब clockwise को minus half नियो, anti clockwise को plus, but opposite spin तक रहबे. It must be opposite spin. गोटे प्लस हाफ बा माइनस हाफ और माइनस हाफ प्लस हाफ. क्लियर? लाइक एनी ऑर्बिटल मोर देन गोटे ऑर्बिटल टू इलेक्ट्रॉन अधिक रहबे, आ दुईटा इलेक्ट्रॉन सबले ऑपोजिट स्पिन रहबे, ए टाइप रहबे, केवल सेम स्पिन रहबे नहीं. ड्यू टू कमें बोथ आर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रे करंट, कैन के सेम स्पिन रहले कोन बोथ काके रिपेल करंट, ऑपोजिट स्पिन कोन ताके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रे. हेले तो मनर एग्जांपल होछ मन गोटे 2s ऑर्बिटल्स, 2s ऑर्बिटल रो दुईटा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रो अछि, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल रो n वैल्यू केता होबो, n l m s. n value केता होबो, n is equal to 2, l is equal to 0, is m is equal to 0, only one value. Like s केता होबो मनर गुटे इलेक्ट्रॉन मनर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज ले होची प्लस ऑफ the first electron. In case of second electron, n is equal to 0, m is equal to 0. But it must be different over, like opposite spin is the minus half. So 3 quantum number केवल same level, maximum 3 quantum number equal level, but fourth quantum number must be different. एटा तो होची Pauli's exclusion principle. Another example होची 3p orbital. 3p orbital, this n is equal to 3, n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to 0 or plus or minus half. This is plus 1. Next s value is equal to plus half. Next this is 3, the first electron. The second electron, n is equal to 3, l is equal to 1. This is 0 and more plus or minus 1. This is minus half. This is a Pauli's exclusion principle. 3 quantum number equal level maximum. The fourth quantum number must be different. The Pauli's exclusion principle. Pauli's मन रखो गुटे ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने रहबो, only 2. s गुटे ऑर्बिटल अछि, गुटे ऑर्बिटल 3 टा रहबो. तीन ऑर्बिटल अछि. Like
First कोई तीन क्वांटम नंबर है pxy py pz the px maximum value रहबो दीटा py रे दीटा pz रे दीटा both opposite spin रहबे total electron 6 रहबे. This is the second concept of electronic configuration. The last concept is Horn's rule maximum multiplicity. Horn's rule maximum multiplicity. Like according to Horn's rule, this concept like no pairing takes place. In the S, P, D and F subcell until degenerate orbitals contains one electron or orbitals of same subcell can feed singly field first, then pairing occurs. And also degenerate orbitals singly filled first, then pairing occurs. These are the Horn's rule maximum multiplicity. The common discussion कहले no pairing takes place in s, p, d and f subcell until degenerate orbitals contain one electron. Like तुम्हारा p orbital में consider होचे like p orbital में थोड़ा से px, py, pz. These are three orbitals. Like Horn's rule कौन कहले degenerate orbitals. Degenerate means होची equal energy occupied करे. ये सब तो होची degenerate orbitals. ये सब ताके कौन कहती equal सब कौन करे occupied करे. केतले एनर्जी occupied करे जेतले इलेक्ट्रॉन सब कौन हबो गुटे सिंगली फिल करे. गुटे सब सिंगल फिल करे. नेक्स्ट आफ्टर से कौन सब pairing takes place करे. In case of मनरा 4 इलेक्ट्रॉन होची तने एमिति देई परबो नै. काहे कि अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल कहले फर्स्ट सब कौन सब सिंगली फिल करे. सब क्लॉकवाइज बोले. नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज আছে. চারটা ইলেকট্রন কোন আছে গোটে ফার্স্ট পেয়ারিং করিব ফিফথ রইলে সেকেন্ড পেয়ারিং লাস্ট আসিব পেয়ারিং করিব. These are degenerate orbitals or orbitals occupied to equal energy. First single fill करे next after से को pairing करे. The second concept is orbital of same subcell. तो same subcell so electrons होचिन orbital होचिन दे then first कौन करे single fill करे next pairing करे. Like degenerate orbital singly filled first then pairing occurs. N orbital d orbital in above. D orbitals first second orbital singly fill करे next सब pairing करे. These are Horn's rule maximum multiplicity. एक example दो देखो electronic configuration.
in case of p 4 electron ଅଛି p रे मैक्सिमम केटा 4 इलेक्ट्रॉन ଅଛି फॉर एग्जांपल देखो नाइट्रोजन 7 atom number 7 according to Hoffer principle first number ଆସିବ 1s रे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन केटा रहबो दुईटा इलेक्ट्रॉन फिल अप होला परे नेक्स्ट ऑर्बिटल हबो लाइक नेक्स्ट ऑर्बिटल आसीबो 2s 1s next 2s2 total electron 7 total electron fill करता 4 electron the next orbital is equal to 2p 2p रे केते इलेक्ट्रॉन रहते 4 and 3 2p 3 1s2 2s2 2p3 like 2p3 electron तमर अछि d जनरल ऑर्बिटल्स आगो तमे डिस्ट्रीब्यूटेड करबो like p रे तीनटा ऑर्बिटल अछि फर्स्ट सब सिंगल अछि like तमे दे परिबो px1 this is the px this py and pz px1 to py1 to pz1 next oxygen 8 1s2 2s2 2p एटी केदा आसीबो 4 ताको सजेक्ट तमे this is the px py pz फर्स्ट सिंगल दबो नेक्स्ट तोरा पेयरिंग अछि लाइक दिस 2px2 2py1 2pz1 these are the Horn's-Roll maximum multiplicity the maximum मतलब clockwise अछि this energy is plus half this is plus half so with the super करे plus half एतरो minus half ओके नेक्स्ट तोरा सो opposite spin पे करे this is the Horn's-Roll maximum multiplicity next element next electronic configuration केतरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोचे the first element hydrogen number of electron 1 this is first orbital 1s put a electron next helium 2 1s2 next lithium 3 like s रे maximum electron दीटा रहबो फर्स्ट दीटा रहला the complete fill up next orbital से जंप करियो like 2s 1 next beryllium 1s2 2s2 total electron 4 is the boron 1s2 2s रे maximum data next orbital 3s 1 next carbon 1s2 2s2 this is sorry 2p1 this is 2p1 this is 2p2 according to Hoffer principle the first is 1s next 2s this 2p next 3s 3p 4s 3d so the consideration next 2p2 next carbon boron carbon next nitrogen 1s2 2s2 2p3 nitrogen oxygen 1s2 2s2 2p4 next oxygen fluorine or fluorine the fluorine 9 1s2 2s2 2p5 2p5 according to Horn's-Roll point किन लिखियो तमे तीनटा ऑर्बिटल अछि px py pz like first single आसियो तीनटा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पेयरिंग करे हम ए हिसाब भी लिख परिबो 2px2 2py2 2pz1 next fluorine neon 10 this is 1s2 2s2
2p6. Then px, py, pz, and 2p single. Next all are pairing. 2px2, 2p2, 2pz2. This is the neon configuration. Next sodium 11 है ना, এটা তোমার সেম কনফিগারেশন রইব আর নিয়ন 10 নিয়ন 10 লিখি দউছি सेम कॉन्फ़िगरेशन पड़े नियॉन 10 नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहबो गुटे 1s 2s 2p नेक्स्ट ऑर्बिटल आसीओ 3s 1 नेक्स्ट मैग्नीशियम 12 नियॉन 10 3s2 next magnesium for aluminum 13 is the neon 10 configuration next asio tomara 3s2 complete fila dela next orbital 3p1 next is silicon 14 this is neon 10 3s2 3p2 silicon for tomara phosphorus 15 this is neon 10 this is 3s2 3p3 so we delete par beti 3px1 3py1 3pz1 phosphorus पर तुम्हारा से कौन आठे sulfur 16 this is neon 10 3s2 3px2 अब तीनटा कोन सब सिंगल पेयर है नेक्स्ट पेयरिंग 3py1 3pz1 sulfur next chlorine this is neon 10 3s2 3py2 3pz1 next argon 18 sorry neon 10 neon 10 3s2 3py2 3pz2 this is the argon 18 configuration. The next is potassium potassium 19 एटम से टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो जे इनेट कॉन्फ़िगरेशन कार आर्गन 18 एट पकि दो जे आर्गन 18 आ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आसीओ नेक्स्ट आसीओ 4s1 नेक्स्ट कैल्शियम 20 दिस इज द आर्गन 18 4s2 नेक्स्ट है स्कैंडियम 21 this is the argon 18 4s2 next orbital 3d1 next titanium 22 argon 18 4s2 3d2 like 18 20 22 next 23 vanadium argon 18 4s2 3d3 3d रे तो d ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना रहबो मैक्सिमम ऑर्बिटल रहो पांचटा एटे पांचटा उसमें d xy dyz dzx ds स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर रे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहबो 10 टा इलेक्ट्रॉन दे तमे रख करे 3d ऑर्बिटल्स नेक्स्ट vanadium परे chromium like argon 18 मन रखो तमे एक्सेप्शनल केस आसियो एक्सेप्शनल केस कोन एटी 4s1 3d5 आसियो तमे लिखिया देखो 4s2 3d4 एटा तमे एक्सेप्शनल केस कोन लिखिते 4s1 3d5 क्लियर कोन पे तमरो लाइक तमरे देखो ds to d generate orbitals in case of 3d रे मो चारटा इलेक्ट्रॉन दलो 4s2 3d4 दलो और फर्स्ट चारटा इलेक्ट्रॉन दलो गोटे एडी कोन खाली रहला
4s रे केतरा रहला माने 2 इलेक्ट्रॉन दिसता ए गुटे इलेक्ट्रॉन जंप करे गुटिके 18 प्लस योटी कोन पे एक्यूरेट हॉर्न्स पे कोन बेले मैक्सिमम तक मते स्टेबल चेष्टा करथि तो सब जग ऑन पे स्टेबल हे जाय सो तमे गुटे इलेक्ट्रॉन जंप करछि गुटिके हायर स्टेट 3d 3 टाइम मैक्सिमम ऑन पे चेष्टा करे एते गुटे इलेक्ट्रॉन कि गुटे इलेक्ट्रॉन जंप करे t लास्ट पर एक 4s1 3d 5 100 important exceptional classes of chromium 4s1 3d 5 next chromium पर तो आसियो manganese 25 argon 18 is the 4s2 3d 5 d रे मैक्सिमम ऑन पर गेला इलेक्ट्रॉन जंप करबने नेक्स्ट मैंगनीज पर है आयरन 26 this argon 18 4s2 36 next cobalt 27 argon 18 4s2 3d 7 next cobalt for nickel 28 argon 18 4s2 3d 8 next copper 29 argon 18 80 तमरा exceptional case आसीबो 4s1 3d 10 दरे 4s रे गुटे इलेक्ट्रॉन আছে d रे मन नोडा दबो 4s2 देली 4s2 3d 9 देली एटनो दीडे इलेक्ट्रॉन देलो गोटे सब सिंगल दबो नेक्स्ट आफ्टर कोन आसे सब पेयरिंग करे एले गुटे एडी अनपेयर रोच मैक्सिमम सब कोन होला पेयरिंग करले गुटे ओनली वन तो रहला ए गुटे इलेक्ट्रॉन को ता एनर्जी एक्सचेंज करियो हाई स्टेट को लाइक 4s1 3d 10 अन मैक्सिमम स्टेबिलिटी करे स्टेबिलिटी केते रहबो देते हाफ फील्ड और फुली फील्ड लाइक p रे मैक्सिमम केते इलेक्ट्रॉन होचे 6 टा p ऑर्बिटल रे मैक्सिमम तोर केतना रहउछि 6 टा इलेक्ट्रॉन रहउछि टोटल 6 टा इलेक्ट्रॉन छै केता हाफ फील्ड रो सोजा सु ऑन पेयर कर रहित एटा होछि हाफ फील्ड फुली फील्ड केतना आसीबो सोजा पेयरिंग कर दे इज अ फुली फील्ड इज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन half filled fully filled same d orbital से आसियो d रे पांचटा ऑर्बिटल अछि फर्स्ट मोनर सब सिंगल ऑक्युपाई करले इज द हाफ filled नेक्स्ट सो द पेयरिंग कर दे मोनर एटा अछि fully filled दीटा होचे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम तो इलेक्ट्रॉन सब स्टेबल रे चेष्टा कर लेकिन d जनरल डॉट पे सब बड़े इक्वल एनर्जी ऑक्युपाई कर मिनिमम चारटा एनर्जी के इक्वल करला आगु टिप से कोन स्टेबल हे जो सेते 4s सेकंड गुटे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके स्टेबल हे जो मन रखो कपटा होचे एक्सेप्शनल क्लास 4s1 3d 10 नेक्स्ट जिंक 30 argon 18 4s2 3d 10 this is the configuration of 1 to 30 elements next हम इलेक्ट्रॉनिक configuration दबा different ions रो
electronic configuration of ions. First देखो example तो जोड़े Na plus next Cl minus. लाइक हम ऑलरेडी जानते Na रे कितने इलेक्ट्रॉन होचे 11 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक configuration 1s2 2s2 2p6 3s1. Na plus means गुटे इलेक्ट्रॉन से कौन करছে डोनेट कर दीचे डोनेट कोटी इलेक्ट्रॉन करियो आउटर मोस्ट सेल the last cell is equal to 3s 8 गुटे इलेक्ट्रॉन तुमे लॉस करछ એટલે કન્ફિગરેશન Na plus টা કાર શો કરે તમારો નિયોન રો નિયોન ઇલેક્ટ્રોન કેતરા 10 ટા તાર કન્ફિગરેશન શો કરે કોણ Na plus like એડા ଆସିବ 1s2 2s2 2p6 3s गुटे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर this is the electronic configuration of Na plus. Next Cl रे electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 this is the 17 Cl मान में से जो गुटे इलेक्ट्रॉन से कौन होचे एक्सेप्ट करछ एक्सेप्ट करले का configuration आछियो 17 আছে गुटे इलेक्ट्रॉन में एक्सेप्ट करले 18 का configuration आछियो argon like 1s2 2s2 2p6 3s2 p6 this is the Cl minus electronic configuration. Next calcium 2 plus 1s2 2s2 2p6 this 3s2 this calcium is equal to 3p 3s2 3p6 like 4s2 this is the 20 configuration with the 2 plus means 2 electron loss the 4s this is the calcium 2 plus clear. Next mano tomro manganese 2 plus manganese configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d this is the configuration of manganese. 25 this is the Mn2 plus 2 plus means electron loss करछि electron loss कर go to 4s orbital loss कर not 3d orbitals काहे कि 4s तो होछि outer most cell like first cell second cell third cell fourth cell ए फर्स्ट सेल तो कोन अछि only 1s second रे 2s 2p third 3s 3p 3d 3 टा कोन अछि 3d5 अछि लास्ट सेल कोन अछि कोन 4s एले इलेक्ट्रॉन लॉस करे कोड हो आउटर मोस्ट लॉस करियो जतो इलेक्ट्रॉन कोड बाहर करियो 4s रे बाहर करियो one is 2 2 is 2 2p6 3 is 2 3p6 and 4 is the 4 is 0 3d. In case of manganese 4 plus manganese 4 plus 1 is 2 2 is 2 2p6 3 is 2 3p6 4 is to d electron बाहर कले 3 डोल केते बाहर हो हां दीटा 3d this is the Mn 4 plus starting with 4 s बाहर करो then 3d orbital रो इलेक्ट्रॉन बाहर करो. नेक्स्ट देखो एक्सेप्शनल केस chromium copper chromium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 chromium 2 plus देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 s रे गुटे इलेक्ट्रॉन गला आउट इलेक्ट्रॉन जीव 3d4. नेक्स्ट कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. In case of copper 2 plus 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s0 89. This is the configuration of copper 2+. Clear? The electronic configuration of different ions. So today we discuss the electronic configuration of different rules and also mention the electronic configuration of 1 to 30 elements. Clear? Mo class like already tomorrow kichi clear कर देती है electronic configuration. Like तीन rule मन रखो, तीन rule देखिए तुम कौन करियो electronic configuration mention कर पारियो. So the topic is over. But thanks.